namaste, and welcome to Sky247.net presents Not Just Cricket. Well, it was a very, very interesting game. Nikkhil and I are here to discuss this further with you. It was a game where bowlers held their sway, but in the end, Rajasthan with an empathetic win between the two Royals. Nikkhil, what do you want to say about this? देखिए, गेम तो अच्छा था और दाद देने भी राजस्थान एक बार फिर से एक स्कोर को डिफेंड करती हुई, और अगर मैं गलत नहीं हूं करिश्मा, ये सबसे छोटा टोटल होगा इस सीजन इस टूर्नामेंट में जो एक टीम ने डिफेंड किया है. एंड सो यू गॉट टू गिव क्रेडिट. एंड अच्छी बात ये, राजस्थान एज अ यूनिट, एज अ टीम इस विक्ट्री को और जोर शोर से बनाएगी, बिकॉज नन ऑफ द बिग स्टार्स गॉट यू रन्स. बटलर ने रन नहीं बनाए, पडिक्कल ने रन नहीं बनाए, संजू सैमसन के वो 20-22 रन थे, डैरिल मिचेल ने रन नहीं बनाए, शिमरन हेटमायर ने नहीं बनाए, रियान पराग ने आके रन बनाए. You know, we were expecting good things out of him for a long period of time, and I always say कि जिस नंबर पे वो बैटिंग करने आते हैं, या कोई भी बैट्समैन 6 नंबर 7 नंबर पे बैटिंग करने आता है, जब दिन बहुत अच्छा होगा एक टीम का, he won't get more than 5, 7, 10 डिलीवरी at the max. लेकिन जब स्कोरबोर्ड का प्रेशर होगा, 50 पे 5 होंगे या 70 पे 5 होगा, then you might get 50 odd deliveries or 55 deliveries to try and build some sort of an innings to take that score to respectability and then hope for the bowlers to go out there and defend. तो आज उन्होंने वो जिम्मेदारी दिखाई. That responsibility from that young man was incredible, and I think he had an outstanding day. एक तो वो 50 रन बनाए, वो 56 रन, and उसके बाद एक नहीं 4 कैच भी पकड़े उन्होंने. So he had a fantastic day, but I guess for Bangalore, वो जो हम कह रहे थे ना कि वो nightmare, वो hangover, वो खत्म नहीं हुआ, because in a T20 game, and especially in this 120 ball format, when you're looking to chase, अगर आप 120 गेंदों में 7 बैट्समैन वो बॉलें गिन के नहीं खेल पाते, then you have some sort of worry. तब आपको you have to go back to the drawing board, sit and chat with your batsmen saying कि guys, 7 बैट्समैन है, आप जरा अपने आप को देख लीजिए, सब अंतरराष्ट्रीय स्टार्स हैं, हम 120 गेंदें नहीं खेल पा रहे. So and we're looking to only chase 145. आपके लिए टर्निंग पॉइंट क्या था? जो लगातार विकेटें गिर रही थी, और मुझे लगता है वो कुलदीप सेन वाला जो ओवर था, वो जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, वो तेज रफ्तार से जब वो विकेटें चटका रहे थे. सो आई थिंक दैट टू मी वाज वेयर आई थिंक द गेम चेंज्ड ऑन इट्स हेड. एंड ऑल्सो जब रविचंद्रन अश्विन भी वो गेंदबाजी कर रहे थे, रियान पराग, लाइक आई सेड कि जरूरी रन आए थे वो. आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट एज वेल, दैट 56 दैट गॉट राजस्थान to that respectability. And then वो कुलदीप सेन की 4 विकेटें 20 रन देके, and he really broke the batting of Bangalore. फिर उसके बाद then the magician Ravichandran Ashwin just came up and finished everything as well, and Prasidh Krishna followed up, as well as Yuzi Chahal. So all in all, I guess that 50 odd मेरे लिए that was the turning point. अगर वो 50 रन नहीं बनते तो आपके 140 144 बोर्ड पे नहीं होते, and then the Rajasthan bowlers won't have anything to bowl to. So, Riyan Parag, I'm glad you are doing justice to the talent that you have, young man. Okay, let's talk about break के बीच में सिराज के इंटरव्यू के टाइम पे उन्होंने बोला था that he did say it's a difficult pitch and they just targeted back of the length area, and that is where Rajasthan really did all the damage as well. तो आप ये स्टेटमेंट से सहमत हैं? जी बिल्कुल. उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है. आप कभी भी गेम देखते हैं करिश्मा, जब एक बॉलर विकेट लेने को देख रहा हो, हाथ में नया बॉल हो और एक या पार्टनरशिप ब्रेक करने को देख रहा हो, 6 में से 4 गेंदें वो लेंथ पे डालने को देखेगा. You know, the fourth stump, or maybe that corridor of uncertainty, when the batsman has that chance of getting caught behind, or when he looks to play, when there's a little bit of bounce, वो कैच पॉइंट पे आउट होते हैं. But when you look at the ball at the depth, then you get the slow balls in, then you get the yorkers in, then you get the variations in to trouble the batsman. But as a fast bowler, your first thought of picking up wickets is try and come and bowl that hard length, that test match length, and that line in that corridor of uncertainty. वहां पे विकेट्स मिलती हैं. और आज जिस तरीके से वो विकेट जा भी रहा था, हमने ये बात भी की थी, पूना का विकेट एक ऐसा विकेट है जो फास्ट बॉलर्स को वो मदद देता है. एक्स्ट्रा बेटर जिप इन इट, इट्स अ लिटिल स्पाइसी, एंड थोड़ा सा बाउंस भी मिलता है. So all credit to the pace bowlers, the lines, the lengths that they bowled. मुझे लगता है कि मलिंगा का होना उस खेमे में इनको मदद कर रहा है.
with the likes of Sain, the likes of Prasidh Krishna, and also the experience of Trent Bolt. So they've got some good guys, they've got some good heads out there in the dugout. उससे बड़ा मदद मिल रही है. बिल्कुल. चलो हम बात करते हैं पराग की. A knock, great in terms of value indeed, considering the pitch and the state of the game when he walked in. Incredible. For 3, I think that was the. Yeah, and incredible. And this is what you want to see. Temperament of a young bat. विकेट्स गिरी हुई हैं, स्कोरबोर्ड का प्रेशर चल रहा है, एंड देन यू कम आउट एंड गेट 56 नॉट आउट 31 गेंदों में 180 के स्ट्राइक रेट से ये रन बनाना. 180 का स्ट्राइक रेट इनक्रेडिबल, बिकॉज उसका सबसे बड़ा कारण ये विकेट्स गिर रही हैं, आपके पास काबिलियत है बड़ी बड़ी हिट्स मारने के लिए. 56 रन नाबाद, और आप गेम को एक तरफ ले गए. जहां पे आप 120 125 सोच रहे थे, इस स्ट्राइक रेट की बदौलत आप 144 के स्कोर को ले गए. सो उससे क्या होता है कि पहले ही ओवर से आके आपके बॉलर्स का ना दिल थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है कि यार पहले 6 ओवर में अच्छी बॉलिंग करेंगे ना, बाकी के 14 ओवर फिर देखते हैं गेम, क्योंकि फिर हमारे पास अश्विन है, युजी चहल है, और जिस तरीके से ये लोग बॉलिंग कर रहे हैं और विकेट खेल रहा है, इस गेम को फंसा सकते हैं. बट शुरुआत में ही उन्होंने विकेट निकाल ली. उसके बाद कुलदीप का वो एक स्पेल आया, सो थिंग्स वर्कड आउट फॉर देम, और एक बारी और वो फिर से डिफेंड कर रहे हैं. सो दिस इज turning out to be a lethal team, a dangerous team. Yeah, and Halla ball Rajasthan, Halla ball. Halla ball. Trust you with these words. I love it. He was also very fired up, right? He had like उन्होंने कुछ तो हर्षल को बोला था. There were some heated words दोनों के बीच में after the last over. I don't know if you saw that. But isn't that the beauty of sport? You want that emotion. Yeah, you want that. Correct. You want that emotion, guys. You know, playing for the sides. You know, everything on their sleeve, their hearts out there. वो इमोशन दिखना चाहिए. वो जुनून अपनी टीम को जिताने के लिए दिखना चाहिए. वो लड़ाई संघर्ष देखने का तभी तो मजा आता है कि यार ये अपना ना सब कुछ झोंक रहे इस मैच में. That is what you want to see. This is the beauty about sport. Yeah, I have to say I get cheap thrills, when people fight and stuff. I want to know what's going on. I really enjoy. Even मेरे रास्ते में if somebody's fighting, I'll be the one who gets out of the car and watches. I like it. It's not right. Let's not be like this, but I do. Let's talk about Krishna, who's another bowler who seems to be growing and evolving across different phases. बिल्कुल. और मुझे खुशी इस बात की है कि जिस पेस पे वो गेंद डाल रहे हैं, you know, the way he's been bowling with that sort of pace, the lines, the lengths. उन्होंने जब विराट को भी जो गेंद डाली थी, so it just goes to show that and he had that smile on him as well. जब वो विराट को गेंद डाल रहे थे, he knew कि विकेट आज उनके मतलब की है. Otherwise, अमूमन you know, you see विराट कोहली is always looking to be controlling the game. कोई जो मर्जी हुई वो गेंदबाजी कर रहा हो, लेकिन आज उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी. वो जानते थे कि विकेट उनके मतलब की है. नजर डालिए, वो 24 गेंदों का स्पेल जो था, 23 रन दिए, 2 विकेट, 16 डॉट बॉले. तो सिर्फ 8 गेंदों में वो रन पड़े, 16 डॉट बॉले. पता चलता है कि आज इस गेंदबाज ने कितनी अच्छी गेंदबाजी की कि इनके खिलाफ कोई रन नहीं बना पा रहा था. यही छोटी छोटी चीजें आप देखते हैं. जैसे हम लोग बात कर रहे थे, एक टीम में 6 बैट्समैन होते हैं, उनका दिन होता है तो वो मुकाबला जिताने को देखते हैं. जिस तरीके से रियान पराग, आज कुलदीप सेन और प्रसिद्ध कृष्णा का दिन था कि आज हम आपको ये मैच जिता के दिखाएंगे क्योंकि हमारे मतलब की वो पिच है. दैट स्विचिंग ऑन इन योर हेड एज अ स्पोर्ट्समैन, एज एन एथलीट, दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट टुडे इज माय डे, क्योंकि यू वेट फॉर दैट मोमेंट की व्हेन यू फील गुड इन दैट पार्क आउट देयर कि यार आज तो मेरा दिन है, आज मैंने मैच जिताना है. So I'm glad Kuldeep and Prasidh were able to do that, and also Ryan Parag. Okay, let's talk about Ashwin. He should be now classified as Ashwin, you know, the carom ball bowler in the T20s. But whatever it is, it seems to be working well for him, right? It's working well against all right-handers. जिस तरीके से उन्होंने आंड्रे रसल को आउट किया था, उसी तरीके से आज भी वो एंगल का इस्तेमाल किया, क्रीज के कोने से जाके वो कैरम बॉल डाला. It's the angle in the air that forces the batsman to play the line where he sees the ball coming in. वो पिच होने के बाद इतना सा गेंद सीधा होता है, and that is good enough. So he plays really well with the angle, and मुझे लगता है कि सब बैट्समैन ना उनको थोड़ा सा ज्यादा सम्मान क्या कहते हैं, या उन्होंने वो सम्मान कमाया है.
all the batsmen are a little wary of him कि यार ये अब कौन सी बॉल डालने वाले हैं. Yeah. So you Mansa. know he's been able to earn that respect Yeah. 120 गेंदों के फॉर्मेट में. So credit to Ashwin. Yeah, absolutely. Now, I'm just going to check if we're going to have the numbers tracker next or the social tracker. But before that, we have to talk Whatever about you want, Karishma. Whatever you want. Yeah, no, even I'm waiting. Actually, let's talk about Josh Hazelwood. Certainly won the battle between Joss and Josh. At the time of Rajasthan were tottering at 33 for 3. सीनियर बॉलर वो आके अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, और यही फर्क है, यही चीजें आप देखना चाहते हैं कि जो विपक्षी टीम के मेन बैट्समैन है उनको किस तरीके से कौन सा बॉलर टारगेट करता है और किस लाइन पे वो गेंद डालने को देखता है. दो इट वाज अ लिटिल सॉफ्ट डिसमिसल की जो शॉट मार के वो आउट हुए थे, बट एटलीस्ट उस समय बैंगलोर का खेमा खुश होगा कि यार एक जो आदमी हमें तंग कर सकता था या मैच हरा सकता था, जो इतने मुकाबले अकेला जिताता आ रहा है या इतने शतक बना रहा है, इतने रन बना रहा है, वी वर एबल टू गेट हिम आउट एंड इट अफेक्ट्स द डग आउट ऑफ द टीम एज वेल. राजस्थान को भी फर्क पड़ा होगा जब बटलर आउट हुए, बट उसके बाद वो जिम्मेदारी रियान पराग ने निभाई. बट आई एम हैप्पी फॉर हेजलवुड कि उन्होंने आके ये स्पेल डाला. सो ही ट्राइड हिज बेस्ट, इवन हिम, यू नो, 16 डॉट बॉल्स, 4 ओवर में 19 रन, 2 विकेट. दीज आर मैजिकल स्पेल्स. आज आप देखेंगे, अगर गौर से देखेंगे, सभी फास्ट बॉलर्स के आंकड़े जो है ना इस पिच के ऊपर, पुणे वाली पिच में सबके आंकड़े अच्छे होंगे. अगर विकेट भी नहीं निकाली तो कोई महंगा साबित नहीं हुआ, क्योंकि आज इनके लिए इस पिच में कुछ था. बट आई एम हैप्पी टू सी अ ट्रैक लाइक दिस because there's a little competition between bat and ball. Otherwise, all the batsmen tend to be flat track bullies. You don't want 220 runs being scored every single time. When there's a little bit of competition, it forces you to use your head. That's the bowler in you that's talking, I can tell. Okay, that's true. Let's get on to our social tracker sponsored by sky247.net, and let's see what people have been saying and tweeting while the game has been on. So let's take a look. So Bella tweet here. Right, there we go. So happy for Riyan Parag. Great way for someone who's been trolled mercilessly to show what he's capable of on a tough surface, and he's only 20. Nice. Good. ये बेचारे, ये मेरे को समझ में नहीं आता, ये लोग कौन है जो ट्रोल करते हैं अननेसेसरली. हाँ, मैं आपको बताती हूँ. मैं आपको शो के बाद बताती हूँ कैसे लोग हैं. Let's take a look at the next tweet. On one, Kuldeep brings 2 fire. And the next tweet, let's take a look. This one is, I mean, look, he's smiling, but I think there's a lot behind that smile, Nikkhil. You saw that? It's unfortunate, you know. जी, देखिए, मेरे लिए जिस तरीके से उन्होंने इतने साल रन बनाया, एक अच्छे खिलाड़ी का मैं मानता हूं कि अब तक वो सीजन उस तरीके का नहीं रहा जिस तरीके के उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, बट ही विल बाउंस बैक एंड आई जेन्युइनली फील because form is temporary, class is permanent. It's just unfortunate कि वो रन नहीं बना पा रहे, but खेल जहाँ है जोरदार करेगा, and I'm just out there and get runs, not just because of Bangalore, but also for Team India's sake as well. Yeah, we need him back. Put it this way. Yeah, I also think, I just think as a human being, people have to realize that cricketers are also in a fatigue bubble. वो लोग बहुत ही खेल रहे हैं. We're all humans. If we've had a long day, the next day we're exhausted. Imagine, I don't care how much you get paid, how successful you are, but a human being is a human being, and you get exhausted. And without a doubt, सबको लगता है कि भाई मशीन है, वो आके हर मैच में 100 बना देगा, 70 बना देगा. ऐसा नहीं होता है. आप अपने परिवार को जरूर मिस करते होंगे. आसान नहीं रहता कि आप एक बंद कमरे में रहते हैं, आपके पास सारी सुविधा रहती है. बहुत से लोग कहेंगे अरे ये तो होटलों में रहते हैं, बट मानिए बात, जब वो खिलाड़ी खेलता है, वो चीजें जब आपको किसी चीज के लिए मना किया जाता है ना, उसी चीज को आप ज्यादा मिस भी करते हैं कि आप बाहर नहीं जा सकते. और जस्ट अ स्ट्रोल इन द पार्क, छोटी चीजें. हम लोग बबल में थे, जब काम कर रहे थे करिश्मा, पूल में नहीं जा सकते थे. पूल था, पानी था, सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर नहीं जा सकते थे. सो वो चीजें आप फिर और थोड़ा सा
वो मिस करते. It's just that little bit of fatigue. So Uh-huh. I am very optimistic and positive in terms of him getting back into form. Yeah. कि इस टूर्नामेंट के अंदर ही आप उनको देखेंगे रन बनाते हुए. बट अगर वो आने वाले 5 मैच में अगर मैं मानता हूँ 200 या 300 भी बना देते ना, उसके बावजूद आई वुड वांट हिम टू टेक अ ब्रेक इफ ही पॉसिबली कैन. बाकी तो उनका खुद का डिसीजन है. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक कि गोइंग इनटू फिर विश्व कप, वो ये टूर्नामेंट ज्यादा जरूरी है बनिस्बत के ये 5 T20 जब दक्षिण अफ्रीका भारत आएगा, उसमें वो एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. Everyone needs a break and I think people just need to be kind. Okay. चलो बात करते कल के गेम के बारे में. Obviously it's Gujarat taking on Hyderabad, two teams who are in a habit of winning. So that's going to be very देखो अब मैं और कुछ कह ही नहीं सकता. I'm only okay for this. All of a sudden I've become very patriotic to being a Gujarati, which I've never been in my life. मैं वही तो कह रहा हूँ, अब मैं कुछ और कह ही नहीं सकता. Dare I go with the other team? So मैं तो कल अभी से बता देता हूँ, चलिए मेरी फेवरेट गुजरात है. Even though we love dosa and South Indian food and stuff, we'll stick to the Gujarati thali. That's great. So tomorrow will be match number 40 at Wankhede Stadium, Mumbai. Gujarat taking on Hyderabad, and it's going to be a very good game because they're both very, very good teams. And I think we're going to be back tomorrow, 6:30 p.m. IST time. And top two teams of the table, Karishma. Yeah. So this encounter should be really good. Like a battle of evens, at least, equals, so to speak. So it's going to be even better. But hum kal fir milne wale hai at 6:30 p.m. IST time, only on Sky247.net presents Not Just Cricket. Thank you so much, Nikkhil, for joining me, and thank you to our viewers. Take care of yourself. Bye. Thank you.